Good morning, class 11th. Welcome to accountancy period. Most of the adjustment of final account with adjustment we have done. Let us count today. Number one, we have done outstanding expense, prepaid expense, then depreciation, then closing stock, then accrued income, then unaccrued income, then goods given as charity, goods given as free sample, goods lost by fire, bad debts, provision for bad debts, provision for discount on creditors. So approx 15 adjustment and GST also approx 15 adjustment we have done, 15 to 60. And today we are doing the last adjustment, that is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. Now, what is the meaning of deferred revenue expenditure? In business, there are certain expenditure which are occurred with a big amount or with a huge amount, and benefit of those expenditure we will not get at the same time. We might be getting benefit of those expenditures in coming years. For examples, advertisement. Before advertisement, let me give one more example, salary. When we pay salary, so immediately we get benefit. First we get the work done and then we pay the salary. So immediately benefit we are getting, wages, transportation charges. But just I told you the advertisement. Today we are doing advertisement. Lakhs of rupees are spent by the businessmen on advertisement. Regularly we have to spend money on advertisement, but benefit we will be getting after a certain period, not today. So such expenditure are known as deferred revenue expenditure. These entire expenditure we never show in the profit and loss account in 1 year only, because if we show this entire expenditure in 1 year, so the profit of that year will go down with much amount. उस साल का प्रॉफिट एक साथ बहुत कम हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई दीज deferred revenue expenditure are fictitious assets for us, and we will be showing them into balance sheet. Every year part amount of advertisement expenditure we will be transferring to profit and loss account. How? Let us see. We are doing today sum number 14. We are doing sum number 14. Mahavir and Sons. The name of the sum is Mahavir and Son. Mahavir and Sons. After trial balance, the first adjustment is closing stock, sir. We have done so many times. Closing stock, trading account, credit side, balance sheet, asset side. Next point, write off 1/5 of the advertisement expenses. So let us see, sir, advertisement expense. Here we have given advertisement is 45,000. No, we have given 6,000 rupees. Advertisement expense 6,000 less return of 1/5. It is 1,200. So the remaining advertisement expense is over here, and to advertisement expense 1,200 हम यहां से राइट ऑफ कर देंगे. हमने जब एडवर्टीजमेंट की तो हमारा टोटल एक्सपेंस 6,000 हुआ, जो इस सम के हिसाब से कम है, बट इन एक्चुअल इन प्रैक्टिकल करोड़ ऑफ रुपीज आर स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, करोड़ ऑफ रुपीज. तो अगर मैं, जैसे आप पेप्सी का एग्जांपल लो या किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल लो, करोड़ों रुपए वो एक साल में खर्च कर देते हैं. तो अगर सारे का सारा खर्चा अगर हम एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे तो हमारा उस साल का प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम आ जाएगा. इसलिए उस सारे एक्सपेंस को एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा करके पार्ट अमाउंट, जैसे सब यहाँ डिसाइड बिजनेस में नहीं करता है, तो हियर बिजनेस डिसाइडेड 1/5 वी आर ट्रांसफरिंग दिस अमाउंट एवरी ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस. यानी इस साल का मेरा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस 1200 ही माना जाएगा. If we do not have any adjustment on advertisement, then this entire advertisement we will be showing over here. उस केस में हम सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाएंगे. चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, sundry debtors include an item of rupees 2,000 due from a customer who has become insolvent and nothing is recoverable from his estate, his property. So let us find the debtor dear. We have given debtors of rupees 54,200 less bad debts
2,000 rupees. The remaining debtors are 52,200. And here that 4-line equation will work, sir. Recall your memory. 2 bad debts, add further bad debts which is rupees 2,000, add new provision less old provision. Right, sir? Continue. Next point. Create a provision for doubtful debts at 5%. Now less provision for bad debts 5%. So this 5% provision will become, my dear friends, 2610, and this 2610 will be shown over here. Add new provision. Next, interest on investment at the rate of 15% is receivable for the full year. इन्वेस्टमेंट पे हमें 15% इंटरेस्ट मिलना है. फर्स्ट लेट अस फाइंड द इन्वेस्टमेंट. हमारे पास सम के अंदर सर इन्वेस्टमेंट दे रखी है 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे दिखा देंगे. इस पे 15% इंटरेस्ट कितना बन गया माय डियर फ्रेंड्स? 4,500 रुपीस का इंटरेस्ट बन गया. लेट अस सी हैव वी रिसीव्ड एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और नॉट. लेट अस सी सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज सेपरेटली नॉट गिवन टू अस. हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो इट इज अवर अक्रूड इनकम. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500 इट बिकम्स अवर इनकम, एंड accrued interest on investment 4,500 it becomes our assets also. Next point, annual payment are, सालाना पेमेंट देते हैं सर. सैलरी 43,200. let us see, do we have salary in our trial balance? we have given salary of rupees 36,000 rupees to salary 36, and some says that the annual salary is 43,200. 36,000 already shown means 36,000 already paid. It means the remaining amount is outstanding. Add outstanding salary 7,200, and this 7,200 is our liability. Outstanding salary, and the same treatment is to be done with the rent. I think you can do it. Now trial balance, sir. Capital as usual, balance sheet liability side. Drawing, deduct from capital. Goodwill is our assets. Plant and machinery is our assets. Purchase, trading account, debit side. Sales, trading account, credit side. Sundry debtors, done. Creditors, balance sheet, liability side. Sales return, deduct from sales. Purchase return, deduct from purchase. Opening stock, trading account, debit side. Cash in hand, assets. Wages, trading account, debit side. Telephone charges, profit and loss, debit side. Salary, done. Printing and stationery, trading account, debit side. Sundry income, profit and loss, credit side. Rent, done. Investment, done. General expense, profit and loss, debit side. And bills payable is our liability. So in this way, today we have done one more sum which is related with final account with adjustment. दो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक मैनेजर का कमीशन का पॉइंट बाकी है. टाइम बीइंग के लिए अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो मेरा ये चैप्टर लगभग क्या हो गया है सर, पूरा हो गया है. दो एडजस्टमेंट मेरी बाकी रही है, उसको हम एग्जाम के बाद देखेंगे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे. अब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट हो गया. आपका हाफ ईयरली एग्जाम 2 नवंबर से स्टार्ट है. अब हम नया चैप्टर आपका हाफ ईयरली एग्जाम के बाद स्टार्ट कराएंगे. प्रशांत सर रिवीजन करा रहे हैं. आज मेरी ये लास्ट क्लास है. प्रशांत सर अब इस चैप्टर को आपको रिवाइज भी करवा देंगे, और आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम मींस आफ्टर दिवाली वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर. आज मैं आपको इसके 7-8 सम दूंगा, 7 to 8 सम, जिनको आप धीरे धीरे करते रहें. हाफ ईयरली एग्जाम में इस फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का भी एक सम आएगा जो कम से कम 12 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा. राइट सर? तो थैंक यू वेरी मच.